Today we shall have an idea about empirical and molecular formula and carry out certain calculations relating to it by certain examples or questions. Now we know that what is an empirical and molecular formula. Empirical and molecular formula may be similar or same, or it may differ. Now empirical formula we know is nothing but a ratio of the number of atoms of different elements present in a particular molecule of a particular compound. किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जितने तत्व हैं उनकी संख्या का अनुपातिक नंबर एम्पेरिकल फार्मूला के द्वारा बताया जाता है. और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? Molecular formula represents the actual number of atoms present in a molecule of a particular compound. Many times we find that empirical and molecular formula are same, but not necessarily. The molecular formula may be a multiple of the empirical formula, whereas the empirical formula can be fractional also. Okay, then let us get into the related questions relating to empirical or molecular formula. And the questions appear like this. ये क्वेश्चन है जो कि जेईई में आ चुका है. An organic compound containing C, H and N, that is carbon, hydrogen and nitrogen, gave the following results. The percentage composition यहाँ दिया हुआ है और ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसमें एम्पेरिकल फार्मूला किस प्रकार से और कौन सा सही है, ये निकाल करके हम बता सकते हैं. तो इसके लिए सबसे सरल मेथड, या हम कहें कि एक प्रकार की तरीका है, ट्रिक, तो हम क्या कहें, इट इज नॉट ए ट्रिक बट इट इज अ मेथड, सिंपल मेथड टू कैलकुलेट द परसेंटेज और द एम्पेरिकल फार्मूला व्हेन द परसेंटेज इज गिवन. इस प्रकार का एक टेबल बना लीजिए, एलिमेंट का नाम लिखिए, एटॉमिक मास लिखिए उसका, और गिवन परसेंटेज जो दिया हुआ है वो तो हम यहाँ लिखेंगे ही, और फिर रिलेटिव नंबर निकालने के लिए हमको जो परसेंटेज दिया है उससे एटॉमिक मास, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए. यू गेट सर्टेन वैल्यूज हियर. अब इसमें देखिए कि सबसे कम नंबर, न्यूनतम वैल्यू क्या है, सबसे कम नंबर क्या है. अब आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, कैलकुलेशन तो आपके सामने है ही, और ये 3.33 इज द मिनिमम नंबर. तो 3.33 से इसको डिवाइड कर दीजिए हर एक को, एंड of course here you get 1, here you get 4 in case of hydrogen, and in case of nitrogen it is 1, particularly in this question. So accordingly you have to write the number of different elements to make out the empirical formula, and the empirical formula as it is here will be C1H4N1. 1 is usually not written, and therefore the formula is CH4N. And since it is a MCQ type question, one option correct, we have to mark the correct answer, and the correct answer is this way. Option C is correct. Now let us go to the other question. The other question is almost similar to it, and the percentage composition of organic compound is almost here is given. So we have tabulated here, and we have got the simplest ratio here. And the simplest ratio, accordingly, the formula comes out to be CSCl3. CSCl3 is the empirical formula, but now here something is different. They want molecular formula when the vapor density is given. We know that molecular mass or molecular weight is equal to 2 times the vapor density. So here we have to calculate the empirical formula mass and molar mass separately. Find out the ratio between the molar mass and the empirical formula mass. Molecular weight is equal to 2 times the vapor density, and the vapor density is provided here, so we calculate as 120. Now therefore the ratio comes out to be 1. That means the empirical formula and the molecular formula are same in this case, and therefore here the molecular formula will be CHCl3.